Hey, I was so excited to talk about applied history that I forgot to welcome you and give basic introduction to the chapter. I'm sorry. कोई गल नहीं, अब कर लेते हैं, right? So welcome to this third chapter titled Applied History from your favorite history book, and it is Happy History. The third section is titled Applied History and Our Present. Ready for it? Yes, let's go. Who are you? I mean, what is your identity? Where does your identity come from? Hmm? What's going on? Mm-mm. Whether we like it or not, history is always and will always be present with us all the time, right? आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ से आती है? हिस्ट्री में से आती है, राइट? आप कौन है, कहाँ से मालूम पड़ रहा है? आपकी भी अपनी हिस्ट्री है. सो हमें पसंद हो या ना हो, जिंदगी की हकीकत है जिसे हम ठुकरा नहीं सकते हैं, और वो हकीकत है कि हिस्ट्री हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी. ओके, वो पास्ट है बट हमेशा हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ में रहेंगे और फ्यूचर में रहेंगी. वाह, इंटरेस्टिंग ना. वो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट बट वो हमारे साथ अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी. ओके, कूल. ये जो फैक्ट है आपके बुक में इस तरह से दिया है: द विजिबल एंड इनविजिबल, the visible and invisible relics of the past exist in the present. Relics means something from the past, okay? So let's repeat. The visible and invisible relics of the past exist in the present. We are curious, attracted, and also wish to know more about history. Why? Because it connects us to our ancestors, to their creative thoughts and traditions, right? हम हिस्ट्री जानने के लिए क्यूरियस होते हैं. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट क्यूरियोसिटी, राइट? एंड वी आर अट्रैक्टेड. हम क्यूरियस भी हैं, हम अट्रैक्ट भी होते हैं, एंड हमको वी विश ऑल्सो, हमको वो जानने की एक इच्छा होती है, राइट? सो क्यूरियस, attracted, and we wish to know more about our history. I hope that's true for you too. I am always. Why? Because it helps us to connect to our ancestors. इसकी वजह से हम हमारे ancestors के साथ connect हो पाते हैं. What about the ancestors? वो किस तरह से सोचते थे, उनकी क्या traditions थी, right? So it connects to our ancestors, by which we mean that it connects us to their creative thoughts and their traditions. Thus, history is our heritage, linking us to our traditional, linking us to our tradition. Too emotional, यार, रोना आ गया. वेल, यहाँ पे वापस अप्लाइड हिस्ट्री की बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में कर लिया है. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप इट. ओके, सो अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट, राइट? हमारा जो प्रेजेंट है वो हम समझते हैं. हाउ? with the help of history and finding right direction for the benefit of our future, right? ये हमने already आगे कर लिया है, so I'm not going to repeat it, you know it well. Yeah, so as we also saw at the beginning of the chapter, that conservation and preservation of history, as we saw at the beginning of the chapter, the conservation and preservation of our heritage and making it accessible to people is also part of applied history, and it creates employment opportunities, right? ये सारा हमने already first section में पढ़ लिया है. So whatever you have here in front of you at the moment, ये सारी चीजें हमने already कर ली है, and it's just mentioned here again. Well, whoa, we're done with the third section also. Wasn't that quick? Too quick it was. Yeah, so let's move on. Here we are, ready to start the fourth section, management of cultural and natural heritage. First, we shall attack cultural heritage. Cultural heritage, it's a form of human creation, okay? It's a form of human creation.
सो कल्चरल हेरिटेज में दो टाइप्स है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। अगर आपको टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में डिफरेंस पता है तो ये आपको याद रखना बहुत ही ईजी है। टेंजिबल जब हम कोई चीज़ को टच कर सकते हैं, राइट, उसको टच करके उसको फील करते हैं, सो दैट इज टेंजिबल। And non-tangible is you can't touch it, you can just feel it, you can just see it, you can just understand it, you can experience it, right? So tangible and non-tangible. So under tangible, what do we have? All the things that comes under tangible. Okay, और ancient sites आप उसको टच कर सकते हो, buildings है, artifacts है, manuscripts है, sculptures है, paintings है, right? So आप उसको टच कर सकते हो, उसको छू सकते हो। So ancient sites, ancient buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings। खाली आपको अपना दिमाग लगा के एक लिस्ट बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल एज वी सेड, यू कैन टच देम, राइट? सो इसके अंदर क्या आएगा? सब ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज। जो ओरल ट्रेडिशन है, आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्टोरी पास हुई है, राइट? सो दैट्स ओरल ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो सोशल कस्टम्स और रिचुअल्स है, राइट, जिस तरह से बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म हम करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हो रिचुअल्स में, हम परफॉर्म करते हैं पर उसको टच नहीं करते, राइट? रिचुअल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। So non-tangible does not have physical form, okay? Styles of performing art, जो art है, right? Different art forms है, जैसे डांस है, जो भी है, सिंगिंग है, so you don't touch। अब ये मत बोलना कि हम सिंगिंग में पेपर को टच करते हो, पेपर अलग बात है, ओके? आपका दिमाग वहाँ पे जा सकता है, इसके लिए मैंने पहले से ही वार्न कर दिया। Certain traditional skills है, communities, groups represent such traditions, customs and skills। So non-tangible में ये सारी चीजें जिसको आप छू नहीं सकते हो, राइट? यू कैन टच। सो ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, social customs and rituals, styles of performing arts, certain traditional skills, communities, groups represent such traditions, customs, skills. Okay? All this comes under non-tangible part of cultural heritage. So easy and simple, yeah? And it's time to attack natural heritage. So natural heritage के अंदर क्या है? It is about biodiversity. Natural, right? Natural. Okay, so this word should just give you a hint. Biodiversity, जिसके अंदर है flora, fauna, ecology and geomorphic characteristics. Okay, flora, fauna, ecology and geomorphic characteristics. अब ये जो इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक जो है उसका क्या रोल है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल टू सस्टेन फ्लोरा एंड fauna, right? Flora fauna, it depends upon the ecology, environment, geography कैसा है। So we know when we visit some places तो बताते हैं यहाँ पे ये grow होता है because of this geography, because of this ecological reasons and all of that, right? So ecology and geomorphic characteristics are very crucial, very important for sustaining what? Flora and fauna. I mean flora and fauna of a particular region. UNESCO, नाम तो सुना ही होगा। Well, UNESCO is a global organization which has announced some directives, right? हमको मालूम है यूनेस्को जो है वो कोई national institution नहीं है, it's a global, okay? It works for the entire world. It's a global institution which has announced some directives, okay? पर को क्यों announce किया है ये? So these directives were announced with the objective of promoting the cultural and natural heritage. हम यहाँ पे cultural और natural heritage की बात कर रहे थे, right? So ये जो यूनेस्को है, जो global institution है, उसने बहुत सारे directives announce किए हैं और उसका मकसद क्या है? ताकि cultural और natural heritage को हम promote कर सकें। आपने बहुत बार कई जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा कि इट्स अ यूनेस्को साइट। आप कभी किसी के कोई इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आप देखते हो इट्स यूनेस्को साइट, राइट? सो देयर एम, उनका मकसद क्या है कि जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसको प्रमोट करना, ओके? पण कैसा रे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव्स, ये जो डायरेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पे
A list of sites and traditions are declared as वर्ल्ड हेरिटेज. जैसे अभी मैंने बोला राइट कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा पढ़ा रहेगा. सो डायरेक्टिव्स जो बनाए हैं उसके बेसिस पे दे हैव आइडेंटिफाइड साइट्स एंड प्लेसेस जो ट्रेडिशंस है और उनको वर्ल्ड हेरिटेज करके डिक्लेयर किया है. ओके, सो देन दो साइट्स आर प्रिजर्व, उनका ध्यान रखने में आता है, उसको मेंटेन करने में आता है. So this is what UNESCO does. Okay, so UNESCO is a global organization which has announced some directives. These directives were announced with the objective of promoting the cultural and natural heritage. On the basis of these directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. ओके, हम नेचुरल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं राइट. ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, सो वर्ल्ड हेरिटेज. सिंपल. बुक के पेज 18 पे बहुत ही लंबा लिस्ट है राइट. यू हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड इंटेंजिबल, कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज? ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो अलग अलग नाम है, अगर आपको लिस्ट देने में आती है तो आप कैसा बोल सकते हो कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा? कोई आइडिया है? बताऊं? वेल, जब वो ट्रेडिशन के बारे में है, थिएटर है, चैंटिंग है, डांसिंग है, अभी हमने इंटेंजिबल के बारे में पढ़ा राइट. सो ऑल दिस थिंग्स, ट्रेडिशन, थिएटर, चैंटिंग, डांसिंग, ये सारा ओरल एंड इंटेंजिबल में जाता है. यू कैन नॉट टच देम. ओके, सो ऑल दैट गोज इन ओरल एंड इंटेंजिबल. फिर कल्चरल हेरिटेज, कल्चर की बात हो रही है राइट. सो दिस आर टेंजिबल थिंग्स एंड यू कैन टच देम. ओके, सो कल्चर रिलेटेड है. सो बिल्डिंग्स, केव्स, फोर्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो कल्चरल हेरिटेज में जाएगी. ओके, एंड नेचुरल नेचर रिलेटेड राइट. सो पार्क्स है, वैलीज है, घाट्स है, जैसे वेस्टर्न घाट है राइट ना, कोई नेशनल पार्क है. सो ये सारी चीजें कहाँ जाएगी? नेचुरल हेरिटेज में. सिंपल राइट, काफी सिंपल है. ओके, ओरल एंड इंटेंजिबल. इंटेंजिबल याद रखो. ओके, सो जो ओरल एंड इंटेंजिबल के अंदर आपको इंटेंजिबल याद रखना है तो उसके हिसाब से आप उसमें डालोगे. कल्चरल हेरिटेज, कल्चर की बात हो रही है राइट. ये टेंजिबल चीजें हैं, बिल्डिंग्स, केव्स, वो सब. और नेचुरल के अंदर नेचर रिलेटेड आ जाएगा. ओके, अगर आपको चाहिए तो ये सारे नाम्स आप मिक्स करके एक लिस्ट बनाओ और फिर आप एक्सरसाइज करो और वहां पे बाजू में लिखते जाओ ये कौन से कैटेगरी में आ सकता है. Try it out. I'm sure you will manage it. It's very simple. और लास्ट यहाँ पे एक जो कैटेगरी है, एक जो प्लेस है, only one place, okay, which is खांग चेंद जोंगा. खांग चेंद जोंगा नेशनल पार्क. हम बड़ा है बट इसको याद रखना है. जैसे खान, हम खांग नहीं बोलेंगे, खान. सबको खान याद रह जाएगा राइट, बॉलीवुड पे से. फिर चेन, I think there was another actor, something like that, right? So Kang Chen Zonga. Chen Chinese जैसा right? Zonga भी Chinese जैसा ही लग रहा है. So Kang Chen Zonga. Okay? Kang Chen Zonga. Kang Chen Zonga. Kang Chen Zonga. National Park. ये mixed category में आता है. Okay? So it does not fit into any of these categories. उसका नाम क्या है? वो mixed category है. Okay? Simple. Try out the exercise. Here I have a question for you. Who takes care of cultural heritage? ये जो cultural heritage हम बोल रहे हैं, सारी buildings, caves, monuments है जो बोल रहे हैं, उसका ध्यान कौन रखता है? Who takes care of cultural heritage? Hint देऊँगा? Do you remember Sir Alexander Cunningham from second chapter? याद आ रहा है? We had an interview with him. हमने उनका interview लिया था. Yes, he was the first Director General of what? Yes, Archaeological Survey of India. Okay, so cultural heritage का ध्यान कौन रखता है? Archaeological Survey of India. That's one. There are other two also. So Archaeological Survey of India. Cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology.
ओके, सो एक जनरल ओवरऑल इंडिया का है, राइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड सेकंड जो है वो पर्टिकुलर स्टेट में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सो इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ओके, सो ओवरऑल एक इंडिया का और एक दूसरा है वो स्टेट है, राइट, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। एंड द थर्ड हियर वी हैव इज इंटैक, आई फॉर इंडियन, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट, एन इज नेशनल, इंडिया इज अ नेशन, सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट, कोई भी जब डिपार्टमेंट बनता है उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, राइट, ट्रस्ट फॉर दिस, ट्रस्ट फॉर दैट, इन्हें वे हमको हमारे इंडियन नेशनल पे ट्रस्ट है, ये डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट है, राइट, सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट, यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है, राइट, कल्चर जो हेरिटेज इट्स फॉर्म ऑफ आर्ट, सो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, सिंपल है याद रखना। ओके, सो थ्री, archaeological survey, come on, say it with me, archaeological survey of India, India's state departments of archaeology, and INTAC, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Well, these institutions look after the conservation and preservation, right? We said who takes care of the cultural heritage. उनका care करना है नहीं क्या, उनको conserve करना है, उसको preserve करना है, right? So this cultural and natural heritage जो है उसका conservation और preservation जो है वो institutions देखते हैं, और उसके लिए उनको कौन चाहिए, they need experts from various fields, right? This cannot be just done by random people, experts होना ज़रूरी है, right? So this institutions, this departments को ये सारी cultural और natural heritage को conserve और preserve करने के लिए they need experts from various fields. Okay, so who are these experts? These experts are well aware, उनके पास knowledge है किस चीज़ का, they are experts, right? They are aware of cultural, social and political histories of heritage sites. जो heritage sites पे वो काम करते हैं उसका social, cultural and political histories वो जानते हैं. Okay, so experts बनना है ये सब knowledge होना चाहिए, right? ऐसे ही आप experts नहीं बन जाते हो. So these experts have the necessary knowledge of cultural, social and political histories of the heritage sites. Are we clear? Okay. Let us now understand the factors to consider while working at any heritage site. Institutions जो है वो heritage sites पे काम कर रहे हैं, they have experts from various fields, right? जिनके पास काफ़ी knowledge है. But while working ये heritage site पे काम करने के time पे कौन से factors को ध्यान में रखना ज़रूरी है? You need to be mindful of some factors, okay? So let's understand them. First, खबरदार ओरिजिनल स्टेट को बदला तो, खबरदार, ओके, हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. सो बी केयरफुल, खबरदार ओरिजिनल स्टेट को बदला तो. ओके, सेकंड, व्हाट विल यू सर्वे? The local social structure and psychology of the local people, right? हम locals की बात कर रहे हैं तो वहाँ का जो social structure है वो society कैसी है, वहाँ के लोगों की psychology क्या है, वो survey करना ज़रूरी है. Their current challenges and future expectations, because you are restoring, you are preserving, आप कोई साइट पे काम कर रहे हो, that heritage is in a particular place and that place has people there, right? So वो लोगों को समझना भी ज़रूरी है, उनका सर्वे करना ज़रूरी है. तो आप सर्वे करके क्या समझोगे, वहाँ के जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उनके अभी करंट प्रॉब्लम्स क्या है, उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी. ओके, नेक्स्ट, खबरदार अगर लोकल लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो, you have to be very careful. We said psychology of the local people, right? So you cannot hurt the sentiments of the local people. So
Avoid hurting sentiments of the local people. Avoid hurting sentiments of the local people. अगर उन लोग भड़क गए तो आपका सारा काम बंद हो जाएगा. Okay, so be careful. अरे, wow, you are creating an option for the local people to participate. बहुत बढ़िया. So through this project, आप क्या कर रहे हो? You are creating an option for the local people to participate. जब उसका restoration करते हो वहाँ पे काम generate होता है, right? So local people participate. They have economic opportunities now. Very good. ये तो कमाल कर दिया. Designing systematic plans to employ local skills in a creative way and thereby creating better opportunities of livelihood. Very good. Okay, so अभी proper systematic plans बन रहे कि how we can employ local skills. जो लोग हैं वहाँ पे उनमें skills है. Usually जो जगह होती है वहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ special skills होती है वो heritage के related. Okay, so you are developing systematic plans. Random नहीं, systematic proper plan टू एम्प्लॉय लोकल स्किल्स. वहाँ के लोगों के स्किल्स को एम्प्लॉय करना, उसको यूज करना इन अ क्रिएटिव वे. एंड उसकी वजह से क्या होगा, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रहे, राइट? देयर बाय क्रिएटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड. पैसे कमाने का उनके लिए एक जरिया आप क्रिएट कर रहे हो. ओके, so let's repeat all these factors. You have to join me, okay? So are you ready? Let's go. 1, 2, 3. Handle without causing any change in its original state, the local social structure and psychology of the people, their current challenges and future expectations. Avoid hurting sentiments of the local people, creating an option for the local people to participate, designating or designing systematic plans to employ local skills in a creative way and thereby creating better opportunities of livelihood. था ना easy? बोले ना मेरे साथ में. Very good. Woohoo! We are on the last subsection of the chapter, affiliated professional fields, and with this we will finish the chapter. Woohoo! It says that knowledge of history can be supportive in the decision making with regards to respective legal provisions and public policies. Okay? So, ये जो history का जो knowledge है, it helps us in decision making. हमें decision लेने में help करता है. In what? With respective legal provisions. Okay, with respect to legal provisions, legalities की बात हो रही है, law की बात हो रही है, and public policies, लोगों के लिए, right? That's people stay in a society. So the decisions, the policies should be for the people, right? उनकी welfare के लिए, उनके protection के लिए. तो हिस्ट्री से हाँ जो नॉलेज मिलता है उसकी वजह से हम ये लीगल प्रोविजंस बना सकते हैं और पब्लिक पॉलिसीज. इट मीन्स दैट लीगल प्रोविजंस और पब्लिक पॉलिसीज बनाने में दिस नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स. ओके, एंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, व्हेन वी से दैट लीगल प्रोविजंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, बट फॉर द फॉलोइंग फील्ड्स, दे आर म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, राइट? म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, हम अभी हिस्ट्री की बात कर रहे, राइट? सो म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, काफ़ी हमने पढ़ा इसके बारे में. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अगर आपके पास मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स है, आपके पास वो हेरिटेज है, तो टूरिज्म ऑफ कोर्स होएगा, राइट? यू नो लॉट ऑफ पीपल विजिट इंडिया फॉर दिल्ली, फॉर आगरा, राइट? ताजमहल देखने आते हैं. सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, entertainment and mass media, right? Because that is part of the heritage, right? Art is a form of art. Okay, so museums and archives, preservation and conservation of historical sites, tourism and hospitality, entertainment and mass media. Okay, it's simple, right? So all these fields require experts
ऑल दिस फिल्स जो हम बात कर रहे हैं, म्यूजियम्स है, प्रिजर्वेशन है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट है, जो भी है, उसके लिए हमको एक्सपर्ट्स चाहिए. ओके, एंड हु आर दिस एक्सपर्ट्स? दे हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स. That skill can be in different fields, as we will see, but they have specialized skills. Okay, like architects, engineers, curators, historians, photographers, etc. Right? Architects जो है, and you know their role is in buildings, right? So जो preservation वगैरह है, म्यूजियम्स है, ये सब का ध्यान रखने में, उसको कंजर्व करने में, उसको प्रिजर्व करने में, they can help you. So is the case with engineers, right? Curators जो है, जो आप म्यूजियम्स में जाते हैं तो आपको सब इंफॉर्मेशन देते हैं, right? ये है वो है. सो दैट द क्यूरेटर्स, हिस्टोरियंस, फोटोग्राफर्स, ऐसे जो स्किल्ड पीपल है उनकी जरूरत है. ओके ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्सपर्ट्स. जो सारे एक्सपर्ट्स है, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखने में आती है. ओके, दे आर एक्सपर्ट्स, राइट? सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, उनसे क्या उम्मीद है? First, they should have adequate knowledge of the ancient sites. वो जो साइट्स रिस्टोरेशन हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, प्रिजर्वेशन हो रहा है, राइट? तो जो भी साइट्स की बात हो रही है, उनका उन्हें काफ़ी प्रॉपर ज्ञान होना ज़रूरी है. दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज. ओके, इनफ नॉलेज होना ज़रूरी है. And the second is historical background of the structural remains and artifacts. और ये जो भी उन लोग रेस्टोरेशन कर रहे हैं, जो भी साइट्स है या कोई रिमेन्स है, आर्टिफैक्ट्स है, जो भी है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ हो रही है, ओके, उनके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके पीछे की जो नॉलेज है, वो सारी होनी ज़रूरी है. ओके, सो एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एंशिएंट साइट्स एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. तभी तो भाई आपको experts बोलने में आता है, right? Otherwise why would you be considered experts? Okay, so this is it. Zala Rizala, chapter Zala. Wasn't that easy, small and quick? Yes, it was. Yay! So here we are, done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them. कीप वॉचिंग देम अगेन एंड अगेन, ताकि आपको वो याद रह जाए. बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, बार बार रिपीट करना है. आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए, बट इसे बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है, आपके पास वॉइस है, तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी. ओके, सो कीप वॉचिंग एंड आई विश that you score really well in your exams. Thank you very much. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well, so that your friends also can know about it.